Hi guys, welcome to Call to Mind, Delhi University Series BA program, first year, semester 1, History of India, and the topic is Vedic culture. Let's make a list. What all, you need to revise or review before start answering these questions. So we are going to talk about the Aryan question, questions from the Aryan question, markers of the Aryan culture and its geographical distribution, Rig Veda, complete Rig Vedic phase, including economy, society, polity, religion. And then is the later Vedic phase, will include the sources, questions from the sources, iron technology and its impact. And again, economy, polity, society, religion. And this is the, so I'm going to list the questions, from your past year examination papers from these topics. So before I start listing questions, we're going to do a small discussion. But what you can do is bring sheets so that you can write the question on the top, and then try to answer point wise. All right. So let's get going. So सबसे पहले, Vedic texts are not works of history. However, अगर आप combine करते हैं उसे available archaeological evidence के साथ, then they can be used as a sources of information on various aspects of the life of people living during that time. तो ये आपको याद रखना है. I'm giving you an example. For example, this is from the text belonging to the Vedic corpus. So there is an episode which is being narrated. So हम क्वेश्चन कर रहे हैं, did a great sage name Yagyavallkya ever exist? Did a woman named Gargi participate in a philosophical quest dominated by men? Like, as a historian, when you're asking this question, और अगर ऐसा हुआ था, was the price of defeat in such contest really death? So when such episodes are there or they are narrated, you cannot answer with certainty, right? It is difficult to answer such questions with certainty. And such episodes, definitely, there's a dramatic scene, and it's a philosophical inquiry in which the stakes are very high of reputation and the life itself. It depends upon the different historians. They have different perspective, but the challenge is always, to incorporate both literary and the archaeological evidence, obviously whenever they are available. And when you are dealing with the material culture, always give priority, should be given actually to the archaeological evidence. So the next question that comes to the mind is, who were the Indo-Aryans? Where did they come from? What was the relationship between the Vedic and Harappan cultures? A lot of historians working over it, a lot of debates going on, and there are no definite answers. The research is going on. Just एक line में इसको बोलें, the composers of the Rig Veda describe themselves as Arya. Rig Veda Samhita को देखते हैं. So what was the culture reflected in those family books of the Rig Veda Samhita? Nation culture को describe करते हैं. So what is a lineage, clan, tribe? और अगर हम उस टाइम पीरियड को स्टडी करते हैं तो एग्रीकल्चर का क्या था, व्हाट वर द अदर ऑक्यूपेशंस में जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं, सभा, संहिता या फिर गना, तो वो सब क्या है, उसके व्हाट आर द मीनिंग्स. Several terms for socio-political units, many of which were based on kinship. And what they say about the women, men, and the household. Then Varna in Rig Veda. So what was how the religion was described, the sacrifices to the god, the family, and the household. So when we talk about all this, what was the mindset of people, So we are looking everyday life में,
उनकी एवरीडे लाइफ में उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में हम बोल रहे हैं। प्रैक्टिसेस क्या थी, उनका माइंडसेट क्या था। सब कुछ तो नहीं लिख सकते हैं, बट डेफिनेटली वी आर गोइंग टू पिक द पॉपुलर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस. Whenever possible, when you are answering a question, it is nice to move from literature to archaeology. स्टार्ट, तो अगर आपने पेजेस निकाल लिए हैं तो उसके आप सबसे पहले तो हम क्वेश्चन एक डिस्कस करते हैं. डिस्क्राइब ब्रीफली वैदिक लिटरेचर. ठीक है. हाउ वॉज ऋग्वेदिक सोसाइटी डिफरेंट फ्रॉम द लेटर वैदिक सोसाइटी. तो ऋग्वेदिक के बारे में थोड़ा तो हमने अभी डिस्कस किया है. इट्स अ गुड क्वेश्चन. आई थिंक इट्स अ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पूरे ही कॉन्सेप्ट को लेके क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. सो अगेन द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब ब्रीफली वैदिक लिटरेचर. हाउ वॉज द ऋग्वेदिक सोसाइटी डिफरेंट फ्रॉम द लेटर वैदिक सोसाइटी. तो इसको आप पॉइंट वाइज डिस्कस करिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेते हैं दैट इज़ द व्हाट इज़ आर्य प्रॉब्लम. एक्सप्लेन वेरियस थ्योरीज ऑन दिस. Which theory of the original home of Aryans is most appealing to you. ठीक है. तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है, दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जो कि आपको आर्यंस के बारे में पूछ रहे हैं और इसको आप ट्राई करिए आंसर करने के लिए. और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है देन यू कैन ज्वाइन माय कोर्स. मैं अपने कोर्स में सारे क्वेश्चंस के लेक्चर्स जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, पॉइंट वाइज आंसर्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक रिलीजन. जैसे अभी बात कर ही रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉपुलर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस. मैनी क्वेश्चंस आपको मिलते जुलते नज़र आएंगे, बट आप उनको फिर भी आंसर करिए, आपकी अच्छा रिविजन हो जाएगी. Okay, various theories with regard to the original home of Aryans. Then we have a question on, obviously, society we already talked about, but write it again. Essay on the later Vedic economy and society. Discuss the social stratification and polity as reflected in Vedic text. Position of women in the Vedic period. Many questions looking at the changes from the Rig Vedic to the later Vedic period. So looking at the social and economic conditions. There can be a lot of short notes also, like the Varna system or later Vedic religion, like looking at examining the social hierarchy and the religious practices of the later Vedic period. Many references available, many books are available, and going through this chapter should not take you a lot of time. लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप नहीं कर पा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. देयर इज़ अ लिंक, यू फॉलो द लिंक एंड यू कैन ज्वाइन द कोर्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया. आपको सारे पास्ट ईयर एग्जामिनेशन पेपर्स के अच्छे से लेक्चर्स मिलेंगे. जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसी पे ही लेक्चर्स बेस्ड हैं, और साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा जो कि आपको हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में. तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ज्वाइन करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी. थैंक यू.